हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट गुरु। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में, वेयर वी विल सी हाउ टू इम्प्लीमेंट अ सोशल डिस्टेंसिंग प्रोजेक्ट यूजिंग YOLOv3 एंड OpenCV। इस प्रोजेक्ट में हम लोग प्री रिकॉर्डेड वीडियोस या फिर कैमरा की लाइव फीड पर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को परफॉर्म करेंगे एंड वी विल सी इफ सोशल डिस्टेंसिंग इज बीइंग फॉलोड और नॉट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस सी इट्स फंक्शनैलिटी। So here is the output जो इस प्रोजेक्ट से जनरेट हुआ है। यहाँ पर you can see all those who are closer to each other are in red color, while जो एक दूसरे से काफी दूर हैं are in green color. So that's the whole functionality of this project. Now without wasting any time, let us start building this one. Now here you can see that मैंने एक project folder create किया है with the name social distancing using YOLOv3. अब इसे ओपन करूं तो here I have a Python script file जिसमें I'll code, और इसके साथ साथ मेरे पास दो और फाइल्स हैं which is YOLOv3 CFG and YOLOv3 weights. Now what these files are, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। एंड इसके साथ साथ you can see that I have a सब फोल्डर as well named data जिसमें मैंने एक वीडियो फाइल को स्टोर किया है। एंड दिस वीडियो फाइल will be the testing dataset. Now project start करने से पहले let us understand what is convolutional neural network. A convolutional neural network is a type of neural network that is most often applied to image processing problems. वो situations जहां पर कंप्यूटर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है फ्रॉम अ इमेज और अ वीडियो, वहां पर इसका यूज किया जाता है। एंड इसके साथ साथ वी कैन इवन यूज दिस फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स। न्यूरल नेटवर्क्स बहुत ही फास्ट होते हैं, hence they are very important in deep learning and artificial intelligence. Once you understand कि convolutional neural network कैसे प्रोसेस करता है and what makes them unique in comparison to other neural networks, आपको पता चल जाएगा that why they are important for processing and classification of images. बट पहले बात कर लेते हैं रेगुलर न्यूरल नेटवर्क्स की। रेगुलर न्यूरल नेटवर्क में इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर होती है, जिसमें से इनपुट लेयर डिफरेंट फॉर्म्स में इनपुट को एक्सेप्ट करती है, हिडन लेयर इन इनपुट्स पर कैलकुलेशन परफॉर्म करती है एंड देन आउटपुट लेयर कैलकुलेशंस के आउटकम्स को डिलीवर करती है। इन सभी लेयर्स में न्यूरॉन्स होते हैं जो प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं एंड इनमें हर न्यूरॉन का एक डेफिनेट वेट होता है। इट मीन्स डेटा के बारे में हम कोई भी assumption क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जनरली इट इज अ ग्रेट वे बट नॉट व्हेन वी आर वर्किंग विद इमेजेस। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क डिफरेंटली वर्क करते हैं, वो डेटा को एज स्पार्शियल करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग न्यूरॉन्स टू एवरी न्यूरॉन ऑफ प्रीवियस लेयर, ये बस उन न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट करते हैं जो उसके क्लोज होते हैं एंड हैव सम वेट। This simplification in the connection means the network of whole spatial objects of that dataset. It means that network ये नहीं सोचता that our eye is all over the image. Think it this way कि एक बहुत ही complex image है जिसको convolutional neural network simplify कर रहा है so that it can be better processed. Now let us understand the architecture of convolutional neural network. नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स की तरह ही कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में भी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, और जो दो लेयर्स इसको यूनिक बनाती हैं दैट इज द कॉन्वोल्यूशनल लेयर एंड द पूलिंग लेयर। हाउएवर बाकी न्यूरल नेटवर्क्स की तरह ही इट आल्सो हैव रेलू और रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट लेयर एंड फुली कनेक्टेड लेयर। रेलू एक्टिवेशन फंक्शन की तरह एक्ट करती है और नॉन लिनियरिटी को एश्योर करती है एज द डेटा इन्वॉल्व्स थ्रू ईच लेयर। इसके बिना जो भी डेटा मशीन को फेड किया जा रहा है अपनी डायमेंशनैलिटी को लूज कर देगा जिसे हम मेंटेन करना चाहते हैं। Meanwhile, fully connected layer हमें allow करती है to perform classification on the dataset. यहाँ पर convolutional layer सबसे important होती है, so let us understand it. It works by placing a filter over an array of image pixels and then it creates something called convolved feature map. It is like कि हम किसी भी image को ऐसी window से देख रहे हैं which allows us to see specific features of that image जो शायद उसके बिना देख पाना is not possible. नेक्स्ट इज पूलिंग लेयर। यह पर्टिकुलर फीचर मैप को डाउन सैंपल कर देती है और वी कैन से इट रिड्यूसेस द सैंपल साइज ऑफ द फीचर मैप, हेंस ये प्रोसेसिंग को फास्टर कर देती है बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो नेटवर्क को प्रोसेस करने होते हैं। द आउटपुट ऑफ दिस इज कॉल्ड पूल फीचर मैप। इसे करने के दो वेज हैं, वेयर फर्स्ट वन इज मैक्स पूलिंग विच टेक्स मैक्स इनपुट ऑफ अ पर्टिकुलर कन्वॉल्व फीचर, और एवरेज पूलिंग जो सिंपली एवरेज को लेता है। ये स्टेप फीचर को एक्सट्रैक्ट करता है एंड देन बिल्ड अप इट्स ओन पर्टिकुलर इमेज डेटा एज पर इट्स ओन मैथमेटिकल रूल्स। Now to perform classifications हमें जाना होगा fully connected layer में, and to do this we need to flatten things out. Remember, a neural network with a more complex set of connections can only process linear data. So there are a number of ways जिससे हम ये कर सकते हैं. Like if you are working with unlabeled data, we can use unsupervised learning methods. And another way is using generative adversarial network or GANs. So that is the basics of convolutional neural network. Now let us talk about darknet.
Darknet is an open source neural network framework which is very fast and highly accurate for real-time object detection. इसको directly use किया जा सकता है and it doesn't need any other library. It has two optional dependencies where first one is OpenCV जिसका use किया जाता है when we are working with different image types and second is CUDA which is used for GPU computation. वैसे तो Darknet अपने real time object detection architecture YOLO के लिए बहुत popular है, but it also has several other architectures which are ImageNet classification, Nightmare, RNNs, DarkGo and Tiny Darknet. In our video, we will be working with You Only Look Once or YOLO architecture which is a real-time object detection system. YOLO को हम लोग अपनी necessities के according train कर सकते हैं और we can even use pre-trained weights and in our project we are using pre-trained weights जिसको हमने already अपने project folder में store कर लिया है. Now you must be wondering why we are using pre-trained weights and the reason for that is that YOLO network is a deep neural network with millions of parameters and it requires millions of labeled images to tune all these parameters. But because sometimes we don't have all those resources, so we use something called transfer learning. So here we use the knowledge that the network has already acquired by training on millions of similar images. And that is the only reason that we use pre-trained weights. Now let us start coding, but before that, let us install all the necessary modules and उसके लिए I'm opening command prompt and यहाँ पर मैं लिखूंगा pip install OpenCV Python to install OpenCV. Once this is done, हम लोग numpy को install कर लेंगे by writing pip install numpy. And after installing it, we will install Pillow by writing pip install pillow. Now सारे modules install हो गए हैं, so let us import them. So firstly we will import OpenCV. Now मैं import कर रहा हूँ numpy को as np. Now I will import random and OS module as well. From PIL, I will import image and I will import time as well. Now मैंने एक वेरिएबल लिया है name cap and यहाँ पर I will write cv2.video capture and यहाँ पर मैं data folder से humans.mp4 फाइल को रीड कर लूंगा. Now let us write while true ret, img equals to cap.read. Now मैंने एक infinite while loop ली है and यहाँ पर मैंने read function को call किया है. Now read भी cv2 का एक built-in function है which return two values where first one is the boolean variable which returns true or false based on if the frame is available or not, जिसको हमने store किया है ret variable के अंदर, and second is the image array vector जिसको store किया है img variable के अंदर. Now यहाँ पर I will write cv2.imshow image img. IMShow भी cv2 का एक built-in function है which accepts two parameter where first one is the window name which means the name of the window जिसपे हमें image को display करना है and second is the actual image जिसे हमें display करना है and in our case image is stored in img variable so we have written img here. Oops, my bad here. This is capital I. Now we will write cv2.waitKey1. Wait key भी cv2 का एक built-in function है which allows us to display window for a particular millisecond or until any key is pressed. ये time को in millisecond as parameter accept करता है and it waits for the given time to destroy the window. और parameter में अगर हम 0 pass कर दे then it will wait until any key is pressed. So this is the standard boiler template of OpenCV. Now अगर मैं इसको run करूँ तो you can see that it will start reading the video file. Well, I'm really sorry guys, due to an urgent work I was unable to record this video in one go, so I'm continuing it again. प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ही हमने बफर मॉडल और बफर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में स्टोर कर लिया था. So here you can see this CFG file which is buffer configuration and this weight file which is buffer model, or you can even say pre-trained weights. So now let us read these files using cv2's readnet function. So I'm taking a variable named net and यहाँ पर मैं लिखूंगा cv2.dnn.readnet. And these functions take two arguments where first is the buffer model and second is the buffer configuration. So let us write YOLOv3.weights which is our buffer model and YOLOv3.cfg which is our buffer configuration.
नाउ हम लोग CUDA को मेमोरी में लोड करेंगे. So let us write net dot set preferable backend cv2.dnn underscore backend underscore CUDA. And net dot set preferable target cv2.dnn underscore target underscore CUDA. Once this is done, हम लोग दो और initializations perform करेंगे. So let us write net dot get layer names. Now ये function output layer का name return करेगा जिसका हम लोग आगे project में use करेंगे. So let us store it in layer underscore names. Now मैं एक और variable ले रहा हूँ output layer. And यहाँ पर I will write layer underscore names I-1 for I in net dot get unconnected out layers it returns the index of layer with unconnected outputs and let us print it as well. Now let us make slight changes here. यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ नेम RET जिसकी वैल्यू को मैंने ट्रू सेट किया है. एंड यहाँ पर let us write while RET. Now जैसा कि मैंने पहले बताया that RET is a वेरिएबल जिसमें बुलियन वेरिएबल ट्रू और फॉल्स स्टोर होगी, which means अगर फ्रेम अवेलेबल होगा तो वैल्यू ट्रू सेट होगी, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स आएगी. So let us take an if condition. If RET height comma width equals to img dot shape 2. यहां पर मैं प्री प्रोसेसिंग से पहले इमेज के डायमेंशंस को ग्रैब कर रहा हूं फॉर द स्केलिंग पर्पस. नाउ प्री प्रोसेसिंग से पहले हमें एक ब्लॉब क्रिएट करना होगा. ब्लॉब बेसिकली इज बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट एंड इसे क्रिएट करने के लिए वी हैव टू मेन फंक्शंस इन OpenCV व्हिच इज cv2.dnn blob from image and cv2.dnn blob from images. ये दोनों फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट blob from image takes single image and blob from images take multiple images. Both of these functions perform specific operations जिसमें first one is mean subtraction, second is scaling and third which is optional is channel swapping. So मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ blob एंड यहाँ पर मैं कॉल करूंगा blob from image फंक्शन को बाय राइटिंग cv2.dnn blob from image. नाउ ये फंक्शन कुछ स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है वेयर फर्स्ट वन इज द इमेज एंड इमेज इज द इनपुट इमेज जिस पर हम लोग प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे बिफोर पासिंग इट टू द डीप न्यूरल नेटवर्क फॉर क्लासिफिकेशन. सेकंड इज द स्केल फैक्टर एंड दैट इज दैट मीन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद हम लोग अपनी इमेज को ऑप्शनली स्केल कर सकते हैं बाय सम फैक्टर्स. इसकी डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑलवेज 1 व्हिच मींस दैट नो स्केलिंग, बट हम लोग चाहे तो इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. So let us set it to 0.00392. Now third is the size, which is the spatial size that the CNN expects. So let it be 416,416. Now fourth is the mean. Now these are mean subtraction values. It can be 3 tuple of the RGB value or a single value, in which case the supplied value is subtracted from every channel of the image. एंड मैं यहाँ पर 3 टपल्स ऑफ RGB ही ले रहा हूँ विद द वैल्यू ऑफ 000. फिफ्थ इज स्वैप RB एंड इट इज यूज्ड बिकॉज OpenCV एज्यूम करती है दैट द इमेजेस आर इन BGR ऑर्डर. हाउएवर मीन वैल्यू एज्यूम करती है दैट द इमेजेस आर इन RGB ऑर्डर एंड इट्स डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व करने के लिए वी स्वैप द वैल्यूज ऑफ R and B बाय राइटिंग ट्रू. एंड द सिक्स्थ वन इज क्रॉप एंड हम लोग क्रॉप नहीं करना चाहते हैं सो वी विल सेट इट्स वैल्यू टू फॉल्स. नाउ इस ब्लॉक को हम लोग एज इनपुट देंगे टू द नेट. So let us write net.setInput blob. Now let us take output from the output layer, output underscore layers, and इसको मैं स्टोर कर रहा हूं in a variable name outs. Now यहाँ पर मैं ले रहा हूं दो empty list where first one is confidences जिसका मैं यूज करूंगा to hold object detection and second is boxes जिसका मैं यूज करूंगा to hold bounding boxes. Now let us traverse all outputs from the frame by taking a for loop for out in outs, and let us also traverse in all detections by taking one more for loop
for detection in out. Now detection error में there are 85 points, जिसमें से first 4 points are for the coordinates of the box and index starting from 5 to 85 are for class confidences. And we need the value of that, so we will take a variable named scores and यहाँ पर I'll store detection ranges from 5 to last. Now हम लोग class ID को obtain करेंगे by getting the index of the element that has the highest score. So let us write class ID equals to np.argmax scores. Argmax numpy का एक function है that finds the argument that gives the maximum value from a target function. Now if class ID is not 0, which means if the value of person in the frame is not 0, we will continue. And that is because our main purpose in this case is just to detect person. So let us write continue. Now let us get the confidence score. So let me take a variable named confidence and इसकी value को मैं set करूँगा scores of class ID. And now we will proceed further only and only if the value of confidence is greater than 30%. If confidence greater than 0.3, then we will detect its x and y coordinates. Center underscore x equals to int detection 0 into width. And center underscore y equals to int detection 1 into height. Now हम लोग calculate करेंगे the value of x and y coordinates of the bounding box and its width and height as well. And to calculate width, we will multiply the value of detection 2 by width. And let us convert this data type to int. Now let us calculate height as well, and for that मैंने एक variable लिया है h, and here I'll write int detection id 4 into height. Now हमें find करने हैं bounding box के x and y coordinates, so let us take a variable name x, and यहाँ पर मैं लिखूंगा int center underscore x minus w by 2. Similarly हम लोग y axis को भी find कर लेंगे by taking a variable name y, and यहाँ पर I'll write center underscore y minus h by 2. Now bounding boxes को हम लोग boxes list में append कर देंगे, so let us write boxes dot append x, y, w and h. Similarly confidences को भी हम लोग append कर लेंगे in confidences list by writing confidences dot append confidences, or let us change its data type to float. Now हम लोग perform करेंगे non-maximum suppressions of bounding boxes using deep neural networks NMS boxes. It will return a list of indexes containing only those indexes which we have to consider. So let us take a variable indexes, and यहाँ पर we will write cv2.dnn.nms boxes confidences 0.5 and 0.4. Now मैं यहाँ पर दो और लिस्ट इनिशियलाइज कर रहा हूँ, which is persons and person underscore center, and मैं एक सेट भी इनिशियलाइज कर रहा हूँ नेम वायलेट. Now हम लोग सारे बॉक्सेस को ट्रैवर्स करेंगे and we will take only those boxes जिसका इंडेक्स इस लिस्ट के अंदर है, and then इन रेलिवेंट बॉक्सेस को हम लोग पर्सन लिस्ट में and बॉक्स सेंटर्स को पर्सन अंडरस्कोर सेंटर्स अरे में अपेंड कर देंगे. So let us take a for loop for I in range length of boxes if I in indexes x, y, w, h equals to boxes I. Now let us append these boxes in person list. So persons dot append boxes I, and let us append box centers as well by writing person underscore centers dot append x plus w floor value 2 and y plus h floor value 2.
Now हम लोग person underscore center array को traverse करेंगे and we will find the person centers those who are violating the social distancing norms of 50 pixels. So let us take a for loop for I in range persons, for j in range I plus 1 length of persons. Now let us do one thing. Let us go up and यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ नेम डिस्टेंस अंडरस्कोर थ्रेश, जिसकी वैल्यू को मैंने 50 सेट किया है एंड मैं यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन भी डिफाइन कर रहा हूँ टू गेट डिस्टेंसेस बिटवीन 2 पॉइंट्स. सो हियर इज अ फंक्शन नेम dist which will take 2 points as argument. Now यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ try and except block and in try I will return अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. एंड इन एक्सेप्ट वी विल रिटर्न. So let us go back down. मैं person underscore center points को distance function में pass करूंगा and I will check the distance between these points. And जो भी points violation distance, that is distance underscore thresh की value which is 50 को violate करेंगे, उसको मैं store कर दूंगा in the set name violate. So let us write if dist person underscore center I comma person underscore center j is less than equals to distance underscore thresh, then we will append them. So violate dot add tuple persons I and violate dot add tuple persons j. Now let us take a variable name v जिसकी वैल्यू को मैंने 0 सेट किया है एंड इसका मैं यूज करूंगा टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पर्सन्स दोज हु आर वायलेटिंग द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स. नाउ लेट अस ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड द पर्सन्स. सो लेट अस टेक अ फॉर लूप फॉर x, y, w and h in persons and if these values are in violate, if x, y, w and h in violate, we will set the color to red and v की वैल्यू को भी हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, else we will set the value of color to green. Now let us draw boxes around them. So I will write cv2 dot rectangle and we will draw the box on image. Second parameter is the initial point which is x and y. Third parameter is the endpoint of principal diagonal which is x plus width and y plus height. Fourth is the color of rectangular periphery which is stored in color and fifth is the thickness of the rectangle. Now let us draw a circle as well. IMG x plus w floor value 2 y plus h value 2 0, 0, 255 and thickness be 2. Now let us add text by using cv2's put text function. हमें text को add करना है on IMG which is our frames. The text will be number of violations plus the value of v 15 minus frame dot shape 0 minus 10. Let its font be Herschel simplex. Thickness be 1.
color be 0126, 255, and its thickness be 2. Writer.write img. Now let's go back up, and यहाँ पर I'll write underscore comma frame equals to cap.read. Now यहाँ पर मैं एक frame को read कर रहा हूँ from the video to get its height and width, and let us output the result in a video format by using video writer function. We will store the video in a file named output with .avi extension 30, and video output dimension will be the same dimension जिसमें video थी, so we'll write frame.shape 1 and frame.shape 0. Now let us run it once, and it gives an error, invalid syntax, except return. Okay, this was a mistake. Let us run it again, and it says invalid token. Okay, this was 0.5. Let us run it again. So it generates one more error. Okay, let us run it again. Okay, this is one more typo. Let us do it again, and this time it runs successfully. Oh no, it gives one more error, name video writer is not defined. Okay, this is cv2.videowriter. Let us run it again. Now let us come back down, and यहाँ पर we will write if cv2.waitKey1 equals to 27 break. Now it means that जैसे हम लोग escape key press करेंगे, it will break this while loop, and हम लोग इससे बाहर आ जाएंगे. So after this, let us release the cap by writing cap.release, and now we will destroy all windows by calling cv2's destroy all window function. So let us run it again. So this is the output जो यहाँ से generate हुआ है. So that's it from this video, guys. I hope you like this one, and if you do, kindly give it a thumbs up, share it with your friends, and forget not to subscribe to our channel. If you have any doubt related to any of our project, you can contact me on my Facebook and Instagram handles. Link in the description box. Also check description box for the source code of this project and link to our other YouTube videos as well. This is Akshay signing off.